फाइस्कोलॉजिकल फैक्ट्स मनोविज्ञान। व्यवहारवाद विचार का एक स्कूल जो निष्पक्षता, अवलोकन योग्य व्यवहार प्रतिक्रियाओं, सीखने और पर्यावरण निर्धारकों पर जोर देता है। Behaviorism, a school of thought that emphasizes objectivity, observable behavioral responses, learning, and environmental determinants. द्विभाषावाद दो भाषाओं का अधिग्रहण जो विभिन्न भाषण ध्वनियों, शब्द संग्रह और व्याकरणिक नियमों का उपयोग करते हैं। Bilingualism, the acquisition of two languages that use different speech sounds, vocabularies, and grammatical rules. द्विनेत्री संकेत गहराई के संकेत, जैसे कि रेटिनल असमानता और अभिसरण, जो दो आंखों के उपयोग पर निर्भर करते हैं। Binocular cues, depth cues, such as retinal disparity and convergence, that depend on the use of two eyes. बायोफीडबैक एक प्रक्रिया जो व्यक्तियों को अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे हृदय गति, रक्तचाप की निगरानी करने की अनुमति देती है, जिससे वे आमतौर पर अनजान होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। Biofeedback, a procedure that permits individuals to monitor their own physiological processes, e.g., heart rate, blood pressure, which they are normally unaware of, to learn to control them. ब्लाइंड स्पॉट वह बिंदु जिस पर ऑप्टिक तंत्रिका आंख से निकलती है, एक अंधा स्थान बनाती है क्योंकि वहां कोई रिसेप्टर कोशिकाएं स्थित नहीं होती हैं। Blind spot, the point at which the optic nerve leaves the eye, creating a blind spot because no receptor cells are located there. बॉटम अप प्रोसेसिंग रूप धारणा में व्यक्तिगत तत्वों से संपूर्ण तक प्रगति। Bottom-up processing, informed perception, progression from individual elements to the whole. ब्रेनस्टेम मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा और केंद्रीय कोर, जहां से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी खोपड़ी में प्रवेश करते ही सूज जाती है। यह स्वचालित उत्तरजीविता कार्यों के लिए जिम्मेदार है। Brainstem, the oldest part and central core of the brain, beginning where the spinal cord swells as it enters the skull. It is responsible for automatic survival functions. विचार मंथन एक समस्या समाधान की रणनीति जिसमें कोई व्यक्ति या समूह सभी संभावित विचारों को एकत्र करता है और सभी विचारों को एकत्र करने के बाद ही उनका मूल्यांकन करता है। Brainstorming, a problem-solving strategy in which an individual or a group collects all possible ideas and evaluates them only after all ideas have been collected. चमक प्रकाश की तीव्रता या तरंग आयाम से जुड़ा मनोवैज्ञानिक अनुभव। Brightness, the psychological experience associated with a light's intensity, or wave amplitude. तो बाद सिद्धांत भावना का एक सिद्धांत जो मानता है कि शारीरिक परिवर्तन और भावनाओं का अनुभव एक साथ होता है। Cannon-Bard theory, a theory of emotion that holds that bodily changes and the experience of emotion occur simultaneously. केस स्टडी एक तकनीक जिसमें एक व्यक्ति का गहराई से अध्ययन किया जाता है। Case study, a technique in which one person is studied in depth. कोशिका एक जीवित जीव की सबसे मौलिक इकाई। Cell, the most fundamental unit of a living organism. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना तंत्रिका तंत्र का उपतंत्र। Central nervous system (CNS) subsystem of the nervous system composed of brain and spinal cord. केंद्रीकरण एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना या अन्य सभी के बहिष्कार के लिए ध्यान केंद्रित करना। Centration, the focusing or centering of attention on one characteristic to the exclusion of all others. सेफलोकॉडल पैटर्न वो क्रम जिसमें सबसे बड़ी वृद्धि शीर्ष पर होती है। सिर आकार, वजन और विशेषता में शारीरिक वृद्धि के साथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक काम कर रहा है। Cephalocaudal pattern, the sequence in which the greatest growth occurs at the top the head with physical growth in size, weight, and feature differentiation gradually working from top to bottom. सेरेबेलम खोपड़ी के आधार पर मस्तिष्क की संरचना जो शारीरिक गति, मुद्रा और संतुलन को व्यवस्थित करती है। Cerebellum,
structure of the brain at the base of the skull, which organizes bodily motion, posture, and equilibrium. सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो मस्तिष्क के उच्च संज्ञानात्मक और भावनात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है. Cerebral cortex, area of the brain that regulates the brain's higher cognitive and emotional functions. सेरेब्रल गोलार्ध सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लगभग 2 सममित भाग. Cerebral hemispheres, 2 nearly symmetrical halves of the cerebral cortex. गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं जो 23 जोड़े में आती हैं, प्रत्येक जोड़ी का एक सदस्य प्रत्येक माता पिता से आता है. क्रोमोसोम में उल्लेखनीय आनुवंशिक पदार्थ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है. Chromosomes, thread-like structures that come in 23 pairs, one member of each pair coming from each parent. Chromosomes contain the remarkable genetic substance deoxyribonucleic acid DNA. कालानुक्रमिक आयु किसी व्यक्ति के जन्म के बाद बीत चुके वर्षों की संख्या. आमतौर पर उम्र का क्या अर्थ है? Chronological age, the number of years that have elapsed since a person's birth. What is usually meant by age? चंकिंग परिचित उत्तेजनाओं का एक समूह जो एक इकाई के रूप में संग्रहीत होता है. Chunking, a group of familiar stimuli stored as a single unit. शास्त्रीय कंडीशनिंग एक प्रकार की शिक्षा जिसमें एक जीव उत्तेजनाओं को जोड़ना सीखता है. मुख्य विशेषता यह है कि मूल रूप से तटस्थ वातानुकूलित उत्तेजना CS बिना शर्त प्रोत्साहन US के साथ बार बार जोड़ी के माध्यम से मूल रूप से US को दी गई प्रतिक्रिया प्राप्त करती है. Classical conditioning, a type of learning in which an organism learns to associate stimuli. The main feature is that the originally neutral conditioned stimulus CS through repeated pairing with the unconditioned stimulus US acquires the response originally given to the US. बंद करना संगठनात्मक प्रक्रिया जिसके कारण अपूर्ण आंकड़ों को समग्र रूप में माना जाता है. Closure, organizational process leading to perception of incomplete figures as wholes. कोक्लिया आंतरिक कान में द्रव से भरी कुंडलित सुरंग जिसमें सुनने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं. Cochlea, the fluid-filled, coiled tunnel in the inner ear that contains the receptors for hearing. अनुभूति जानने से जुड़ी सभी मानसिक गतिविधियां अर्थात समझना, सोचना और याद रखना आदि. ये सूचना को संसाधित करने, समझने और संचार करने से जुड़े हैं. Cognition, all the mental activities associated with knowing. Namely, perceiving, thinking, and remembering, etc. These are associated with processing, understanding, and communicating information. संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण जो मानव विचार और मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्रीय के रूप में जानने की सभी प्रक्रियाओं पर जोर देता है. Cognitive approach, the view that emphasizes human thought and all the processes of knowing is central to the study of psychology. संज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था एक पदानुक्रमित नेटवर्क में अवधारणाओं के संगठन के माध्यम से दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता के अधिकतम और कुशल उपयोग को दर्शाने के लिए एक शब्द. Cognitive economy, a term to denote maximum and efficient use of the capacity of long-term memory through organization of concepts in a hierarchical network. संज्ञानात्मक शिक्षा सीखना जिसमें किसी की धारणाओं, ज्ञान और विचारों का पुनर्गठन शामिल है. Cognitive learning, learning that involves reorganization of one's perceptions, knowledge, and ideas. संज्ञानात्मक मानचित्र किसी के पर्यावरण के लेआउट का मानसिक प्रतिनिधित्व. उदाहरण के लिए एक भूल भुलैया की खोज करने के बाद चूहे ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि उन्होंने इसका एक संज्ञानात्मक मानचित्र सीख लिया हो. Cognitive map, a mental representation of the layout of one's environment. For example, after exploring a maze, rats act as if they have learned a cognitive map of it. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं व्यक्ति के विचार, बुद्धि और भाषा को शामिल करने वाली प्रक्रियाएं.
Cognitive processes, processes involving the individual's thought, intelligence, and language. कलर ब्लाइंडनेस, रंग को समझने में कुछ हद तक अक्षमता होना. Color blindness, having some degree of inability to perceive color. रंग स्थिरता, किसी प्रसिद्ध वस्तु को एक ही रंग के रूप में देखने की प्रवृत्ति, भले ही उसका वास्तविक रंग रोशनी में परिवर्तन से संशोधित हो. Color constancy, the tendency to perceive a well-known object as being a single color, even if its actual color is modified by changes in illumination. संकल्पना, विचारों, वस्तुओं, लोगों या अनुभवों की एक सामान्य श्रेणी जिसके सदस्य कुछ गुणों को साझा करते हैं. Concept, a general category of ideas, objects, people, or experiences whose members share certain properties. कंक्रीट परिचालन चरण, तीसरा पियागेटियन चरण, लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु तक रहता है. इस अवस्था में बच्चे ठोस उदाहरणों पर तार्किक संचालन और तर्क कर सकते हैं लेकिन अमूर्त चीजों से नहीं निपट सकते. Concrete operational stage, the third Piagetian stage, lasting approximately from 7 to 11 years of age. In this stage, children can perform logical operations and reasoning on concrete examples but cannot deal with abstract things. Coaching 63950-46